jumping and screaming and anger and all sorts of emotions. So it was so exhausting. मतलब एक तो सोचा ही नहीं कि ये कर पाऊंगी, इस यूनिवर्स का हिस्सा बन पाऊंगी. अगर मुझे बताया जाता है कि आपको ऐसे करना है, अभी ये करने की कोशिश करो, अब वो करके देखो देखो कैसे साउंड कर रहा है. एवरी कैरेक्टर कैन बी मोल्डेड इन अ सर्टेन वे, और वो डायरेक्टर कर देते हैं मेरे लिए, थैंकफुली. तो जैसे जैसे मुझे मोल्ड कर रहे थे, मैं वैसे वैसे मोल्ड होने की कोशिश कर रही थी. एक कैरेक्टर को तो आप मुझे नींद से भी उठाओगे तो मैं कर सकती हूँ. It was definitely very different because never played a 16-year-old, never played a superhero, never been part of a Marvel series. So many things, and just acting through voice. Hi Mithila, welcome to NT. How are you? I am great. How are you? I'm good. So finally, Marvels अब देसी स्टाइल में हो चुका है पूरी तरह से. So how excited you are? I'm very excited. I'm very, very excited. We already in the series have had a few stories that have come out, and now we are about to release Wolverine. So I'm very excited. अच्छा, नरेशन का पूरा वो जो टाइम था, तो कैसा रहा आपके लिए? How was your experience? बहुत मजेदार था. पहली बार एक 16 साल की लड़की का किरदार निभा रही थी. पहली बार एक सुपर हीरो का किरदार निभा रही थी. और ये सारा सिर्फ आवाज से एक्सप्रेस करना बहुत चैलेंजिंग था, बट बहुत एक्साइटिंग था. एंड टू बी एबल टू जस्ट व्हेन यू हैव द एड ऑफ विजन, कि आप हमें जब कैमरा पे देखते हो, या अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मली भी मेरे हाथ में यूज करती हूँ, कि ये सारा कुछ नहीं होता जब आप सिर्फ आवाज से एक्टिंग कर रहे हो. कभी हम किसी को देख लेते हैं और सिर्फ नजरों से कितना कुछ बोल देते हैं. हमारी कविताओं में कितना सब इसके बारे में लिखा है, हमारे गानों में लिखा है. बट देर इज नथिंग टू योर एड. यू जस्ट हैव योर वॉइस, एंड दैट्स ऑल दैट यू कैन यूज टू एक्सप्रेस जंपिंग एंड स्क्रीमिंग एंड एंगर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस. So it was so exhausting in terms of like just imagining how am I going to do this. But once I was there, it was challenging and it was very exciting. It was fun and I want to do more of this. तो शरद के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो देयर विद यू? He was, but when we were recording it, we all did it independently. So, so when we could, like, when we met and when we chatted, it was a lot of fun to know, like, that diversity between, like, him and his, like, deep voice, and me and my, like, squeaky, screechy screams. It was like, I was like, this is going to be, like, you can tell that it's going to be fun. The dynamic of the duo is going to be a lot of fun. So it was a lot of fun. Generally, to be in the room, Mantra was directing all of us, so we were all doing it independently. But now even I can't. I've not heard the entire thing yet, so I can't wait to hear how all our voices have come together, because there's such incredible artists who have contributed to the storytelling. So it's going to be fun. अच्छा, जब पहला ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दैट? कि मार्वल एक हम ना बहुत ग्रैंड उस पे देखते हैं कि यार मार्वल सीरीज है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब कोलैब का रिक्वेस्ट वो आया? बहुत एक्साइटेड थी, ऑब्वियसली, क्योंकि मार्वल है. तो कभी मतलब एक तो सोचा ही नहीं कि ये कर पाऊंगी, इस यूनिवर्स का हिस्सा बन पाऊंगी. और जब इंडिया मार्वल आया है, तो और मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो मैंने कहा ये तो नो ब्रेनर है. आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस. आई हैव टू वॉइस द कैरेक्टर. सो या, इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड सो सरियल. हाउ यू हेल्प योरसेल्फ टू बी इन दैट कैरेक्टर, कि सोफिया की जो वॉइस है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने खुद बोला कि सिर्फ आवाज से लोग आपके एक्सप्रेशंस जान रहे हैं, और को फीलिंग वो वॉइस से आ रही है सारी, तो हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? A lot of credit I will give to Mantra, because he was the one who guided me through it.
we also had a little bit of a reference to the English version, so that we knew that if there were any specific things that I had to express, and I could hear them and kind of learn a little हम्म bit. But a lot of, like, I work well with direction. Like, अगर मुझे हम्म बताया जाता है कि आपको ऐसे करना है, अभी ये करने की कोशिश करो, अब वो करके देखो, देखो कैसे साउंड कर रहा है, तो वो मुझे फिर अगर मैं if I apply that practically, then yes that is useful to me. हम्म So that is essentially how I prepared. I don't like to overthink anything too much. Like, I हम्म read, I try to understand it as much as possible, but I don't try to overthink it. Even as an actor on screen, I try to, like, just go with the flow. Once I've understood the basics of this character, yes and try to put it हम्म together and just go with the flow. And then, of course, every character can be molded in a certain way, और वो director yes कर देते हैं मेरे लिए, थैंकफुली. तो जैसे जैसे मुझे मोल्ड कर रहे थे, मैं वैसे वैसे मोल्ड हाँ होने की कोशिश कर रही थी. तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, लाइक आई सेड, कि देयर वाज सो मच एक्शन, देयर वाज सो मच मूवमेंट इन दैट सेंस, कि हम हम्म यहाँ से कूद रहे हैं, मैं कहीं से भाग के आ रही हूँ दूर से, मुझे कोई हाँ दूर दिख रहा है, और मुझे आई हैव टू कॉल आउट टू देम. So just all of this, while you can see me, it's much easier to do. You realize that much later, after you've, like, been a voice actor. But you just have to do it through voice. So वो सारे voice modulations, हम्म माइक से कितना पास आना है, कितना दूर जाना है, वो सब हाँ सीखने मिला. And in fact, now वो ऐसे लगा, ऐसे I feel like I've tasted blood, so now I want more. So I hope, like, I get to do more of it. सो हैप्पी टू सी यू लाइक दिस. लेकिन एक ना ये होता है कि एक्टर की लाइफ में कि वो नए नए प्रोजेक्ट्स नए नए एक्सपेरिमेंट्स हमेशा करना चाहता है अपने साथ. तो ये प्रोजेक्ट आपके बाकी प्रोजेक्ट से कैसे डिफरेंट था आपके लिए? एक तो सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है. पहले बार, मतलब मैं कर चुकी हूँ, ऑडिबल के साथ ही मैंने एक शो किया था. हम्म बट वो भी, उसमें मैं काव्या कुलकर्णी का ही किरदार निभा रही थी, तो वो इजी था, बिकॉज ये कैरेक्टर को तो आप मुझे नींद से भी उठाओगे तो भी मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं हाँ आई हैव लिव्ड विथ यस हर, आई ब्रीद्ड into her life, into her, so I know her too well, I feel like. Because I हम्म mean, it's been so many years that we've been playing these characters, so obviously. This was definitely very different, because never played a 16-year-old, never played a superhero, never been part of a हम्म Marvel series. So many things, and just acting through voice. So there were so many things that were so different about it, यस just about the existence, just about the proposition of this setup. So yeah, these are the many things that were new and different, and I'm always very curious. Like, I, as an artist, I want to be on my feet all the time. I don't want to get, like, complacency, I don't deal with very well. So if there is a new opportunity, I want to grab it with both hands and see what I can do. Whether I do it well, not do it well, wo to, हम्म. once I do it, only then I'll be able to figure out. But it's always exciting to try. So in future, are you planning anytime soon to act in Marvels? कि हाँ अगर कभी मौका मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी. Why not? I'm Why waiting. not? Where's my offer? I was expecting this from you. Yeah. I would That's want to great. do all those jumps and lunges and punches and or shootouts, actually, like, physically. So yeah, I'll prepare for it. हम बहुत एक्चुअली आपके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे अगर मार्वल्स में आपको अगर वो देखे तो. Yeah. ओके सो एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस फॉर मार्वल्स? Just that, look out for Marvel Wastelanders Wolverine. It is releasing on the 13th of March. So listen to us. Okay, any upcoming projects you want to talk about or any secret thing Actually, there coming are up? a few things that are in the pipeline, but because they are not officially announced, I'm not allowed to talk about them. But in the pipeline to release. So Hmm. whenever we are ready to talk about it, I will obviously come back to you. But the one thing that I recently spoke about Hmm. was my Tamil debut film. Yes. And I will soon start shooting for it. We've not started shooting for it yet, but I'll soon start shooting for it. But that is exciting, acting in a new language. Uh, that is a new avenue. So yeah. So anything for Tamil audience in Tamil? Ayo, itna Tamil, I still don't know Tamil so well, but
I usually sing for them, so I hope like that's enough. I love That's the way enough. you said Ayo. That's enough expression for my love for Tamil audience and all the people over there. But soon, I really hope to like actually be able to say a thing or two in Tamil. Hmm. Okay, thank you so much for your time. Thank you so much for being Thank part of ENT you. Live, Mithila. Thank you. And बहुत मजा आया बात करके, and all the best for Thank you. your upcoming projects and for Marvels too. Thank you for having me. Bye bye. Bye.